Today we will go for the question something like I'll go with the question only, then I'll just brief what we are thinking and how we are thinking and what we have to do. Let this triangle is ABC. Okay. And now in this triangle, three CVN. CVN means the line passing through a point. Okay. This is D, E, and F. Okay. So this divide the complete triangles into few parts. So one of the situation will be this, and second situation will be when I'm saying, okay, the same triangle will be there, but this time this is not the CVN. The CVN is there, but the CVN is not concurrent. Means let this intersect at this point. Again, A, B, and C, D, E, and F. This time, can you see? This time we are just making the CVNs, but this is not concurrent. Some small triangle is inside. Okay. But in this case, this is the CVN, and this divide the triangle into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 part. So these 6 parts are there. But in the second situation, you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, and the 7th part, the triangle is there. The 7-part triangle is there. So in the second part, we have to find the area of that smaller triangle when the ratios are given. And in the first portion, we will start with the first one. In the first portion, if few of the cases are given or a few of the areas are given, then we have to go for especially one or two areas we have to find when the total area is given or not given in between, or we have to find the total area of this. So I'm going with the first one first, then we'll go to the second one. Theme is this one. Okay. So obviously you understand that this is very, very, very important. And इससे जब beyond हम चले जाते हैं, so we can draw the third situation would be like just I'm giving this, will not do this, but कभी और तो जरूर करेंगे. Right. If we are drawing two lines in the same ratios, two lines on this, something like this. Can you see this? Like this is the diagram what we are getting. So this area we have to find or something, but this is totally either RMO high level question or INMO question, right? So we will see this later on. We are starting with first and second. Okay. So this is the theme of the question, what we have to do. So I'm starting with the first one. The first situation is when we have to find some of the areas is given. So this ABC is given. And now few of the areas are given and few are not given. And then we have to see like this area of CPD is X, area of CPE 84. Let this is Y. Let this is 40. This is 30 and 35. Then what we have to do, we have to find area of ABC, area of the triangle ABC. Okay. And this is the CVN, right? So we have to go with like, we know the property of this as AF by FB into BD by DC into
CE by EA is equal to 1. This is Sevas theorem. What we are doing? Just we are going circular. AF by FB, then BD by DC, then CE by EA. In the cyclic order, just you are going, you can start from anywhere and just you have to complete the circle. So this is the first thing what we know. Okay. Now the second is what we have. We have already seen in the last lecture only. If this line is given and one line parallel to this one. Okay, this is ABC. Both the lines are parallel. Both the lines are parallel. Then I can say if the base is BC and the vertex I'm taking at the line, this one. So area of the triangle ABC or A dash BC will be equal. Why this is so? Why this is so? Anyone? Help me out on this. Why the area of all these three triangles will The be? same width and So same height. because Same the base base and and same height are height. same. Height will be always same. So if heights are always same, so obviously base is same. So the area of the triangle will be always same. Okay, so that's the reason we are like doing that. The third thing, what we have to think, like how see now what I'm doing, I'm giving you the planning. Okay, so one planning is this one, second planning is this one, and the third is we have already seen that, but again we'll see. Okay, this is given, and let this is A, this is B, this is C, and this is D in E, and I'm dividing this. D could be here only. So let this is D, E, and F. We are forming a triangle. This BDP. Let this point is P. And the second triangle is this one. Okay. Can I say the area? If I'll see the area of the triangle. So the base is BD and DC. And the height is same in both the cases. Okay. So area of triangle BPD upon area of triangle CPD is nothing but, like in the numerator we have taken this, so height will be same. So this is BD by DC. Okay, this is BD by DC, but I'm not stopping myself here. So in the second case, you can see area of triangle ABD upon area of triangle ACD. What we can write this? What we can write? I'm just asking. Sir, same BD upon DC होगा क्या? Yes. Can you say this? Area of this triangle and area of this one. Height will be same. Okay. So half into base into height, half into base into height. So again, this will be BD upon DC. But what if I'm asking area of, this is very important now. Most of the time we have to use this type of area. That's the reason. Just I'm coming into this step by step.
area of triangle APB is to area of triangle APC. What is that? What we can write this Sir, means BD upon DC only. just I'm saying this one, and second is this one. Very good, beta. So can you सर explain? मीडिया अपॉन ईसी Yes, yes. Why so? Why we are saying सर so? क्योंकि सर हाइट सेम है Okay, very good. सर टोटल माइनस जो सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर दी तो सर वही आएगा ना. Yes, by ratio proportion, you can say this ratio minus this ratio, and this ratio minus this ratio is giving you the same. So this is BD upon DC, or good one. वो भी सही था. Very good. If you'll see this as a obtuse angle triangle, so basis में you can say कि this is the triangle. But विजुलाइज करने में शायद अब आपको आसान पड़े कि व्हाट यू आर डूइंग कि ये बड़े वाले एरिया से हमने दोनों छोटे वाले एरियाज को माइनस कर दिए. सो आई एम गेटिंग दिस वन. Okay, so these three things are there, what we have already done. Now the planning is by these equation or by these theories we have to reach to the conclusion ki what should be the area of this one. Okay, so let's start. Okay, so you have to own a time, take your time, think, then we'll go for this. Okay, this is a very famous question from AIME. So let's start now. सर 1 मिनट और दोगे. हाँ, take your time, beta. हाँ सर 1 मिनट और देना. Yes.
गुड इवनिंग सर, मतलब गुड मॉर्निंग सर। यस बेटा, जस्ट हम लोगों ने जस्ट सभी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं जल्दी से रिवाइज करा दूं बेटा आपको। सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज दिस द फर्स्ट केस यू कैन सी इन योर बोर्ड. This is the first case, right? This is the triangle. ABC is the triangle, and CVNs are AD, B, and CF. If they will intersect at one point, so 6 different areas will come. Okay, so we have to, like, we are dealing with this how to find the area if one or two areas are missing. So how to find the area of this. And second, if the point is not concurrent, let this point is P, so point is not concurrent, so will form a triangle. So this is a very important triangle, right? Because they will ask what is the area of this triangle if few of the informations are given. Okay. And third case is little bit tougher one and more complicated is if the CVNs are such that from each of the vertex, right, from each of the vertex, you can see two lines are passing and that divide in the ratio, sum of the ratios, the opposite to the vertex. Then we have to find the area of this region, right? This is in fact, if you will divide in the ratio of 1:3 na, then this is 1/10 of the total triangle. This is a very famous theorem. So we have this question. We have to deal with this. But the theory, what we have to apply. So what we have already seen, this is the Sevas theorem. Sevas and Min laws, right? Both we have to use. Second is the area. We have already seen that the base is same, the height is same, the area will be always same. And third, we have seen that if the bases are same, so area will be like BPD and DPC. The ratio of the area is the base height is same, so height will be cancelled out. So BD is to DC. Same with ABD and ADC. The area is that this one same ratio. Now just if I'll subtract both this points, so I'm getting this for ABP and ACP. Okay. Now the question is this one. Okay. सर मैंने आंसर भेज दिया है, सही है वेरी ना? गुड बेटा, परफेक्ट होना चाहिए, गलत सर होना। मेरा भी आंसर आ गया। वेरी गुड बोलूं क्या ऋषिकेश। अभी? नहीं बेटा, बोलना नहीं है, लिख डालो, बहुत अच्छा लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। सर मैंने भेज दिया आंसर। वेरी गुड। थोड़ी सी और एक्सपेक्टेशन है, थोड़ी सी और एक्सपेक्टेशन है। थ्योरी जो मैंने ऊपर लगाया है वही थ्योरी है, कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं होगी जो आप नहीं जानते हो। हम लोगों ने लगाया है, बस इक्वेशन सॉल्व करने की बात है, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस। कौन कौन से इक्वेशन मैं लूं जहां से मेरे वर्किंग सिंपल हो जाए। तो कैन आई स्टार्ट नाउ? क्या मैं स्टार्ट करूं? सर 2 मिनट। ओके बेटा। मेरे को दो इक्वेशन चाहिए कि दो अननोन एक्स एंड वाई है, तो मेरे को दो इक्वेशन चाहिए। अब वो दिमाग लगाऊं कि कैसे दो इक्वेशन मैं क्रिएट कर सकूं जहां से ये पूरे काम बन सके मेरे। हाँ सर, वो आपने बता दिया था, ऊपर हिंट दे दिया था हाँ तो बन सब, गया। हाँ वो एकदम सेम फिक्स है सवाल है बेटा। बस। हाँ, सर वो बस कैलकुलेशन दो करना था। क्वेश्चन बस मैं बस बोलूं? बस एकदम बेटा, राइट इट डाउन। आंसर अगर बोलना है तो बोलने से अच्छा राइट इट डाउन इन चैट, क्योंकि सब लोग अटेम्प्ट कर ले फेयर तरीके से ठीक है। ना। ओके, वेरी गुड आद्या, परफेक्ट बेटा। मृत्युंजय डन। शौर्या। हाँ सर, मैं बस वो इक्वेशन सॉल्व करने में टाइम लग रहा था। यस। विवान, विहान, ऋषिकेश, वेरी गुड। जील, अक्षत, आयशा,
yes, you have to use the fundamental what we have done in this. So let's start. The first thing, what we can say, like bases are same in this, so we can stick with that. Like this is the base, again this is the base, again this is the base, this is the base, and we know by Sevas. Sevas is beautifully, I can use Sevas. So this upon this upon this, and this upon this. Any cyclic order you can go. Okay. You can start from anywhere. Okay. So all the areas are directly proportional to the bases, because from P point we can say the height will be always same. Like for the triangle APF and the triangle PFB, the height will be always from P, that will be same. So I can say okay, like this is AF upon FP into BD upon DC into CE upon EA is equal to 1. Okay. In the same manner, I can write down this as 40 by 30 into 35 by X into 84 by Y is equal to 1. This is the first equation, what I'm getting. Okay. The second equation also I'll get from this only. These are very, very, very simple questions. So you all have to be very careful. We need two equations. So first equation, x into y, I'm getting from this. Okay. The second equation from this, we have lots of methods, because we know that area of ACP, the ratio of area of ACP against BPC. This area is giving me the same proportion as already seen this one. Yeah. Or the total one. So I can say 84 plus y upon 35 plus x is equal to 40 by 30. This is the second equation. Vivan, okay. Perfect. Okay, everyone. Okay. So these are the case when I'm saying first is xy is something given in that way, and x by y is I'm getting from this. So we have two things, right? So we have to solve this. Now I'm giving opportunity to all of you. What you have done now, you can say yes. सर मैंने तो दूसरे इक्वेशन की तरह किया था सर, मतलब ट्राइंगल CAF अपॉन ट्राइंगल ट्राइंगल CAP अपॉन ट्राइंगल CPB का एरिया इज इक्वल्स टू 84 प्लस y अपॉन 35 प्लस x इज इक्वल्स टू 40 by 30. यस, सेकंड और इक्वेशन आ सर गया. दूसरी इक्वेशन मैंने लिखी थी दैट सर ट्राइंगल CDE अपॉन चलेगा ट्राइंगल चलेगा. BCD. ओके, सर चलेगा. 80 नॉट बैड. हाँ, चलेगा ना. दैट्स द सेम थिंग. सर उससे दो इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा सर. Yes. Anyhow, you'll get two equation. So what I'm saying ना मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि अगर मेरे को एक मेरे लिए कंफर्म है कि सेवाज से मेरे को एक मिल ही रहे हैं, तो आई गो फॉर द सेवाज. एंड सेकंड में एरिया के लिए वी कैन गो. और अगर एरिया दिख रहा है, यू कैन सी दैट एरिया. तो बहुत अलग अलग तरीके से यू कैन सी द एरिया. पहले इसे नोट करो, फिर इसी में थोड़ा सा और वर्क करेंगे. यस मृत्युंजय. सर हम ऐसे नहीं कर सकते क्या कि ये 2x इज इक्वल टू 84 प्लस वाई. 2x is equal to 84 plus y. Okay. Why वो you are saying so? आप ऐसा. क्योंकि 35 बाई x इज इक्वल टू BD अपॉन DC. 35 by x is equal to BD upon DC. Perfect.
70 by 84 plus y is equal to BD upon BD AC, upon same. DC। तो Yes, दोनों को इक्वेट करके 2x is equal to 84 plus y निकल रहा है। चलेगा बेटा, वेरी गुड। सर अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले में तो मल्टीप्लिकेशन है और नीचे वाले में एडिशन, तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाएगी सर। चलेगा, वो तो नेगेटिव में एक आ रहा होगा तो रिजेक्ट कर सर नहीं, दूंगा। पर ज्यादा इजी पड़ेगा ना सर अगर दोनों लीनियर इक्वेशन होती तो। जैसा भी आप चाहो बेटा ना, हमेशा जरूरी नहीं है एक्स वाई जिस ऑर्डर में दिया है इसी ऑर्डर में हमेशा आपको मिलेगा। ओके सर। हाँ सर, मेरा भी क्वाड्रेटिक बना था, मैं सॉल्व किया था वो, मैंने चलेगा, मैं वो सेम सी, बेस का रेशियो लिया था एरिया अरे का। यू ऑल आर मैच्योर पीपल, आराम से, क्वाड्रेटिक है तो सिंपल ही तो है, क्यूबिक सॉल्यूशन हमारे पास है, हाई डिग्री के सॉल्यूशन है, दैट विल लाइक वो भी हमें कवर अप करना ही है। सो आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस, मान सकता हूँ। ओके, रील ओके, अक्षत अपूर्वा ओके, ओके एवरीवन। Yes, sir. Now, so when we have to find the area and this is given na, so just we are trying कि how to deal with that। अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं इसमें, let I'm giving you one more question, just something more I have to hide here, so let okay, ABC, well this area is 6, this area is 9, this area is 3, you have to find this shaded portion area। Yes, जिस पॉइंट पे इंटरेक्शन हो रहा है उसके बारे में कुछ बोला गया है क्या? नाम दे देता हूँ एक, पी बोला तो कुछ नहीं है बेटा। ओके सर। If you want, I can give the name P. सर शेडेड रीजन का एरिया ढूंढना है। Yes, बेटा। ओके, Area of shaded portion.
Just you have to make the figure in such a way you'll get something. Should I start now? नहीं सर सर 2 मिनट और दोगे? Okay. Take your time. But this is simple. Okay, take your time, everyone. No worry. Take your time. सर मैंने अभी जस्ट डिस्कवर किया कि ये कैसे किया जा सकता है Okay, ऑलवेज go ahead. भेजिए आंसर Go ahead. No worry. Go ahead. Take your time. हाँ सर, सॉरी, एक मिनट दीजिए, कैलकुलेशंस कर। Yes. सर मेरा आंसर मैंने आपको भेज दिया सर, सही है क्या? Very good. अभी देखता हूँ बेटा. Just a minute. Akshat, Dhuvika, Ruskis, Sutiksha. Sutiksha, very good. Perfect बेटा. सर इंटीजर तो नहीं आ रहा ना नहीं, इंटीजर नहीं आ रहा बेटा. इंटीजर हाँ नहीं सर है. तो उधर ही मैं फंस रही थी एक बार चेक कर लीजिए Ujjan, very good. Perfect. Adya, very good बेटा. Perfect. सर यही सही है ना Perfect है बेटा. बिल्कुल. सर मैं तब से यही ढूंढने जा रही हूँ कि ये कहाँ गलती हो गई मेरी मुझे समझ नहीं आया कि इंटीजर नहीं भी हो सकता है हाँ, इसका रीजन है इंटीजर नहीं होने के. ध्रुविका एक बार और चेक करो, शायद कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा होगा. शुड आई स्टार्ट नाउ? मैं स्टार्ट करूं? डन एवरीवन? सी uh how we can proceed on this. Okay, so one thing I can do, okay, just I'll just try to make this. Let This is something I'm just joining A to P. So this AP, and let this is D, and let this is E. Okay, let this is X and this is Y. Right, so now we have little bit कुछ तो दिखाई दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ मेरे को working हो सकती है. So in this triangle I can say कि like AD upon DC is X is to 3, and now the AD upon this I can like I have to go for the entire triangle of this.
this one. What we can say for that? देखो तो एक बार, एक तो मैंने लिख दिया जो बेसिक ट्रायंगल से मेरे पास आ रहे हैं। दूसरा और क्या बोल सकते हो आप? व्हाट यू कैन सर से? y + 6/9 हो जाएगा इज वेरी इक्वल्स गुड। टू y + तो 6। ये वाली जो ट्रायंगल बन रही है, राइट, अगेन लाइक अभी जो ऊपर थ्योरम किया था हमने, तो y + 6 सर मेरा अपॉन आंसर आ गया, सही है क्या? 9, राइट। फर्स्ट तो ये मैंने यहां से निकाल लिया, एंड सेकंड आई हैव टू गो विथ AE upon EB. AE upon EB is nothing but y/6. Okay, and this is again y/6 सर मैंने, x + 3/9। वेरी गुड बेटा, ये मैंने ये ट्रायंगल के लिए लिया। ओके, सो कैन यू सी कि ये वाले ट्रायंगल को, लाइक इफ आई एम नॉट इंक्लूडिंग, तो ऊपर में जो मेरे पास गिवन है, जो बच गया मेरे पास, दैट्स x + 3 upon 9. This is the second. So these two relations are there, and we know like how to go for that. So you can solve for x and y. I hope everyone is getting this. सर इसके अलावा और कोई तरीका होगा इसे सॉल्व करने का, इसको solve बिना करने x और y को लाइक डिवाइड करे हुए? सर मैंने का भी इसी तरीके से किया था, बट सर कोई और तरीका होता है? चलो एक देखता हूँ तरीका। 1 upon del is equal to 1 upon del plus del is the area of the total triangle upon 1 upon 9 is equal to 1 upon 9 plus 6 plus 1 upon 9 + 3 9 1/12। plus 3. जल्दी से चेक करके देखो तो क्या आ रही है डेल इसमें? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल कमिंग फ्रॉम दिस? दिस इज कमिंग फ्रॉम लाइक वही जो हम लोगों ने ऊपर रखा है, उसी से पूरे बात आ रही है, बट इसलिए मैंने शुरुआत में भी इसलिए बोला था कि इफ यू नो द पैटर्न एंड ऑल ना, तो ज्योमेट्री बहुत सिंपल हो जाती है, बट बहुत सारे ये जितने हैं इनके माइंड मैप आपके पास तैयार होके होने चाहिए, राइट? इफ यू हैव द माइंड मैप ना, तो ये अपने आप काम कर जाएगा। सो लेट्स सी क्या आ रहा है, कुछ अच्छा आ रहा हो। वेरी गुड। 180/7 आ रहा है। 180/7 डेल आ गया ना, ये टोटल एरिया आ गया। मुझे निकालना क्या था? डेल तो टोटल एरिया था ना, तो डेल क्या आया? 180/7। ओके, और मुझे निकालना क्या था? सीडेड पोर्शन। तो उसमें माइनस क्या करूं? सर वही आएगा 54/7। आ गया बेटा, एकदम परफेक्ट सा आ गया आपके पास। 6 -9 -3 -3। ओके, सर मैंने ये दूसरे सर वाले ये कौन मेथड सा से किया था, फॉर्मूला 1/del यूज किया था + सर 1/9। आपने? ये थ्योरम जो है इसका नाम है लैडर थ्योरम भी बोलते हैं ना सर? स्टेंजल्स थ्योरम ना। सर ये थ्योरम है क्या? ये थ्योरम बता रहा हूं बेटा अभी। स्टेंजल थ्योरम ना, मैं लेडर थ्योरम बोलना पसंद नहीं करता। अरे किसी का मेहनत है, क्यों उसका नाम खराब करेगा? उसका तो क्रेडिट मिलना चाहिए। क्या? और क्रेडिट मिलना चाहिए ना उसे। सो द यस सर। थ्योरम इज जस्ट आई एम गिविंग यू, जस्ट पहले नोट कर लो एक बार सभी लोग, देन आई एम गिविंग यू एग्जैक्टली व्हाट इज द थ्योरम। सर मेरा भी आंसर आ गया था ये करके, 54/7। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, मैंने वो चैट में भी एक लिखा बात था। पूछो। वेरी गुड प्रांशु, वेरी गुड मृत्युंजय। ओके, हाँ सर, मैं एक बात पूछूं। प्लीज गो अहेड। आपने वो डे 1 पजल जो दिया था, डे वो आप कौन से दिन दोगे? मेरे ख्याल से कल एक और आ जाएगा बेटा ओके। ना। वीक में 2-3 मतलब टाइम भी नहीं मिलता, बट थोड़े से पजल्स टफ होने लगेंगे ना। सी, हम्म। सो सर एक दिस वो कैमल वाला पजल है, उसका बनाना।
अच्छा वो 1000 मीटर जाता है फिर बनाना घूम। बनाना वाला। हाँ शायद वो हाँ, जाता है फिर, हाँ बनाना वाला जो कैमल बनाना बनाना वाला लेके हर जाता है। एक मिनट में बनाना खाता है। यस, वी हैव डन दैट। जील को याद होगा, जील किया था ना। हाँ तो याद है। याद है। सो मैंने जितने पजल से सब किए हुए, अब टाइम के कंस्ट्रेन के कारण ना, just we have to stick with this. So this is A, B, C, and X plus Y. Okay, X plus Y is the area of the shaded portion, what we need. Okay, so the formula is 1 upon del plus 1 upon C. 1 upon del is the area of the total triangle, and C is the area of the lower part, is equal to 1 upon, ये आपके लिए एक होमवर्क भी है, you have to prove this. जो हमने वर्क किया है उसी पर बेस है, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड एक छोटा सा काम मैंने दे दिया कि यू हैव टू प्रूव दिस टू। हाँ, लेडर थ्योरम, ऑब्वियसली लेडर थ्योरम के नाम से आप जानते हो, या स्टेंजल्स थ्योरम जो मैंने यहां दिया है आपको। ओके, नोट डाउन प्लीज। सो व्हेन वी हैव टू फाइंड द एरिया ना, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, सो वी हैव टू मेथड्स, राइट। ऊपर में देखा हमने, जो हमने प्रॉपर पूरे वर्किंग से हम लोगों ने काम किया, और वहां से हम लोगों ने पूरी की पूरी वर्क बनाई। एंड सेकंड इज दिस वन, जो हमने थोड़ा सा लाइक एक ऐसा, you can, like you can use that this one too for all this na, you can extend this, and this was C, so this is C1 and C2, and C1 plus C2 is given C, right? So you can go for that, this also, but I'll recommend कि दोनों अपने अपने दोनों चीजें मेरे को जाननी चाहिए। एंड ये एंड ऑफ द थ्योरी मैं यहाँ पर करके मैं आगे बढ़ना पसंद करूंगा कि आई कैन गो फॉर द सेकंड वन, कि इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं, हाँ, मैं अभी क्वेश्चंस आप लोग को आज सेंड करूंगा, एंड यू हैव टू गो विद दैट ना। आज मैं IOQM के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ। सो ऑब्वियसली हाँ, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, थोड़े बहुत प्रॉब्लम रहने हैं। सो लाइक वी हैव टू डील विद दैट, थोड़ा मेहनत करते हुए उस पर वर्क करना है। सो दिस वाज द फर्स्ट वन। नाउ आई एम गोइंग फॉर द सेकंड वन। अब सेकंड वाले इस पे जब मैं वर्क करने जा रहा हूँ, सो इसमें एक बहुत ही प्यारी सी सिचुएशन होती है, जिसमें क्वेश्चंस का तरीका कुछ अलग होता है। तो फर्स्ट आई एम गोइंग विथ दैट क्वेश्चन ओनली। ओके, then I'll prove that, and then I'll go for the entire theory of that. Okay, फिर से केयरफुल ना, जैसे एकदम कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ ना लास्ट वाले का, वैसे ही वी हैव टू डू दिस। दिस is ABC, is a triangle. Just I am giving this point, this divide in the ratio, 3 points are given. Okay, EFG M. Okay, now you all know what we are going to do. If the area of triangle ABC is given, just we have to attack on this KLM. सर मेरे को आपने शायद ऐसा क्वेश्चन पहले भी दिया था सेवास के टाइम पे। सेवाज के टाइम पे दिया था, एंड इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने बोला था ऑल यू हैव टू डू दिस ना। सो अब समय आ गया, लाइक आई टीच एग्जैक्टली हाउ वी कैन डू and how to deal with that. Okay, so this is given, the situation is something like this. So AE upon EB is 1:3, FB upon CF is 1:3, CG upon GA is 1:3. Now we have to find area of the triangle KLM. Take your time, everyone. So first we'll do with the proper geometry method by like
we have to set up the carpet method, what we have done earlier. Then we'll go with the सर ये sevas or एग्जैक्टली main वो laws. ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो आपने दिया था ना सेवास के टाइम पे। Then we'll go for the sevas and main laws. Then we'll go for little bit, मैं थोड़ा तरीका बताऊंगा, जैसे लाइक कैसा बताते जा रहा हूँ कि आपको सोचने का तरीका आना चाहिए, बट एंड पे मैं एक छोटा सा तरीका दे रहा हूँ कि इफ यू हैव लाइक यू रिमेंबर दिस थिंग, तो डायरेक्टली यू आर गेटिंग द आंसर ना. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइक प्रैक्टिस. मतलब यही सबसे बड़ी चीज मैथमेटिक्स की होती है. इफ यू नो द प्रॉपर मेथड, you know this. Rishikesh, I guess Rishikesh will explain this better because he's a chess player and his ranking is very good. So, he knows ki, if you know all the games and all na, so it will be always easier, right, to predict कि अच्छा इसके बाद तो यही करेगा ये, तो like I have to win the match. Okay, let's start. आप लोग ट्राई करोगे? ध्रुविका, डन बेटा? सर आपने उस दिन जब Yes. कराया था तभी किया था। Wow, very good. वेरी गुड. सो यू हैव टू एक्सप्लेन ना, थोड़ा सा मैं आज मौका दूंगा तुम्हें. हाँ, वेरी गुड, परफेक्ट. सर एक डाउट है बोले, प्लीज आस्क बेटा. सर, कैन वी डू दिस बाय मास पॉइंट? यस, डेफिनेटली. ओके सर। अगर वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, सो यू कैन यूज, बट 3 पॉइंट इंटरसेक्शन में देयर विल बी ऑलवेज प्रॉब्लम विद दैट ना. वो मास पॉइंट गड़बड़ करता है, बट फिर भी ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है. गो अहेड ना, ट्राई दैट.
Wow, very good. Mrityunjay has given a very good hint. So everyone, with that, first try with mass point geometry. Mhm. The area, what is this 2, Rishikesh? What is this 2? The area of ABC we have to consider as 1. Okay. Huh? Then we have to go for तो चलो ऐसा करता हूं ना, क्यों आगे सर बढ़ूं? ये मैं करता क्या सर हूं, इसी क्वेश्चन को 2-3 अलग-अलग तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। यस, आद्या, यू वांट टू से समथिंग? सर मैंने अपना आंसर भेजा है। ओके, दैट्स ग्रेट। वेरी गुड आद्या, परफेक्ट। परफेक्ट बेटा, वेरी गुड। लास्ट 2 मिनट्स एवरीवन। प्रतीक्षा हो रहा है बेटा? अभ्युदय, विहान? नहीं सर, सर आप समझाओगे क्या? यस बेटा, 2 मिनट का लास्ट टाइम दिया हूं सभी को। प्रांशु, दिस इज सिंपल वन। आ रहा? लास्ट 1 मिनट एवरीवन। यस, वेरी गुड। अंशु, वेरी गुड बेटा, परफेक्ट बेटा, वेरी गुड। What you have applied, Pransu? Mm-hmm. Okay. See. So first method, I guess you all love this. Now we will go with 2-3 method as I said. So let's start now. Okay, everyone. See. So now this is given, ABC is given, and we have to go with the area, like what is the area of triangle KLM. So one little bit construction I am doing. I'm using the carpet method for that. I'm doing the construction, and the construction is like I'm joining this C to L. Okay. This. So let's suppose you have to see this very carefully now. Let's suppose you, like, I'm assuming this area ABL. This is okay.
Let this area of triangle ABL, let this is S. Okay. So this is S and this divide in the ratio 1:3. So can I say the area of the triangle CAL will be this divide in the ratio of 1:3. So can I say area of triangle CAL is nothing but 3S? Okay. If this is S, so this will be 3S. So this dividing the ratio 1 to the theorem what we have done earlier. Again, I'm using that one only. Okay. Perfect. And one beautiful, in this you can see from the point L, if I'll divide this, the complete area. So triangle, writing in that way now, triangle ABL, this is the area, plus area of triangle BCL and area of triangle CAL is the area of triangle ABC. Any doubt or confusion on this? Any doubt or confusion on this? Okay, everyone. Can anyone help me out? What is the area of BCL? What is the in terms of S? What is the area? CAL, we have the area, this one. Okay. And ABL, we have area S. What is the area of B? Just I'll mark this. The area of Sir, S. BCL. Just a minute. In terms of S only, na? सर S होगा. YS. Anyone? Just you have to see what is the area of BCL in terms of S. That is the key. That is the key. Sir, S by 3. S by 3. Why so S by 3? So, because like CG upon AG is 1:3 and using like BCL upon ABL and ABL is S. So, X upon S is equal to 1 by 3. Very good. So this is 1 by 3. So I can say that this is again 1:3. Right. On this area is given as 1:3. So everyone see this carefully. Take your time. This is the key. What is the area of BCL? And obviously, like going good in that way. हाँ सर S/3 लग रहा है. लग रहा है, कंफर्म होना है बेटा, कंफर्म होना है. हाँ सर, क्योंकि वो बेस जो CG/G है 1:3 पे है एंड व्हेन वी कंपेयर द टू ट्रायंगल्स तो S/3 आएगा. Very good. Right. It's same thing you can see. Like you have to think the triangle, what triangle you are taking now. So you'll be able to see this now. So just I'll make the triangle now so you can see the red color will work for me. Can I make this one? Okay. So extended form of this is 3:1. Can you see this?
So this is 3 times. So here the area will be 1/3 of that. So this will be S by 3. Is this okay, everyone? Sir, can you explain again? Yes, beta. See, we have already seen that if some triangle is given in this form and one point P is something like that here. So this area and this area will divide in the ratio of the bases. Is this okay? We have already seen that. Yes, sir. Okay, now see this carefully. You have to see this CG and AG. And the triangle, what we have formed here is this one, CLB and ALB. Okay. This is S. This is, we don't have any idea what is that. But this dividing the ratio 3:1 means this area is 3 times of this area, and this is already given S. So can I say this will be nothing but S by 3? So this will be S by 3. Can you see this now? Yes, sir. Now, okay, everyone. Okay, so only you have to rotate this, rotate in a way like you can get something. Okay, now I have to use this ABL. We have already taken as S. BCL, yes, it is S by 3, and CAL is 3S. That is area of triangle ABC. I just don't have any use, so just removing this. Okay, so this is what 9, 4, 13S by 3 is equal to ABC. What I have to find? I have to find the area. Okay. KLM. KLM. Okay. So now, again, I have to do something. So just, okay. So this is ABC. Now the most important part of this. Okay. I have to reach to this point. I have to see the area. So this is the area. Second and third, this is the area. If I'll subtract these 3 areas, that is S, again this is S, this is S, with the total area, so I'm getting the area of KLM. So total area, or in the case, right, ABC, okay, and each and every areas of this is coming as like S is 3 by 13 of that, not total area. So 3 by 13, I can write in this ABC 13 by 3S. So S is equal to 3 del by 13, total area. So what I have to do? Del total minus 3 del by 13 minus 3 del by 13 minus 3 del by 13. So this is 13 4 del by 13. This is your area. And if del is given 1, so this is 4 by 13 of the total area. Not simple one, but obviously, right? Lot of things you have to do. This is the first सर method, right? लास्ट में 2-3 स्टेप फिर से समझा दोगे एरिया पर ऑफ बेटा? एबीसी से सर 13 3/3 से ये क्लियर है? ये यहां से मैंने लिया यस सर एस की वैल्यू, राइट? मैंने जो फिगर में जो कंस्ट्रक्शन दिखाया, ये क्लियर है? दिस वन, this is the one area I have to subtract. This is the another area I have to subtract, and this is the another area. So this is SS. All are same, by symmetric. ABL जो मैंने लिया था, that is BMC, and third is CKA.
Okay, so if I'll subtract these three area, so these three areas, so what I'm getting? 3 by 13, 3 by 13, 3 by 13. All three from the del. I have to subtract. So we are getting S, like Yes, sir. subtracting this. So 4 del by 13. So this is one of the method, like when we have to work. We can also do this by mass geometry. Again, you'll get the same numbers, but like you have to work a little bit harder in that questions. Adya did the same thing, beta? Yes, sir. Okay, good, 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 good. Done, everyone? You can also use min laws for this, and you can go with the area of that. So if you want, can we try that? Yes, sir. Okay, so let's see. Okay, let's start. एंड कहानी का एंड बड़ा अच्छा होगा, प्लीज वेट करना है. हाँ, कहानी का एंड जो होगा ना वो बड़ा अच्छा होगा. इस कारण से ये दिस इज द क्वेश्चन. आज इससे हम लोग एंड करेंगे, खत्म करेंगे इसे. हाँ, सो वेट फॉर दैट. हाँ, सो अगेन आई गेस, हाँ, रिमूव ऑल दिस थिंग. ये रिमूव कर लेता हूँ. ओके, this was the situation was given almost clean. I guess. Okay. So now just we have to work on this. So this is given A upon EB, BF upon CF, and CG upon GA. All are 1:3. What can we say about FC upon BC? Can I say this is nothing but 3:4? And from this, we know that area of triangle AFC, okay, upon area of triangle ABC. What this? AFC, this AFC and ABC. Can I say this is nothing but 3/4? The same thing? Yes, sir. Yeah. Okay. Now see ABF triangle. Just I have to mark this. ABF triangle. Okay. This is ABF triangle. And one transversal, I'm taking this as EKC. Okay. The triangle is here. You can see the triangle and transversal. और कुछ दिखना नहीं चाहिए. हाँ, ये एक बार हमेशा ख्याल रखना इस बात का कि when we are going for that triangle ना, एकदम विजुअलाइज करने हैं, that's it. उसके अलावा कुछ नहीं दिखने चाहिए. That's very important. Okay, so can I say AE upon EB? Okay, then
It's C. So BC upon CF into FK upon KA is equal to -1, or man laws hai, but we are taking the like length only. So this is 1. So from this, can you find FK upon KA? Do it, everyone. Go for that. All the ratios are given. Just you have to go for that. AE upon this is 1:3. BC upon already seen that 4:3, and this is what we have to find, FK upon KA is equal to 1. So from this I can say this is 9/4 only. This is 9/4 only. Is this okay? Is this Yes. okay? Now everyone is getting this? Okay. So this is FK upon AK. FK upon AK. But I'm more interested for, like, I have not to go for this thing. I'm more interested, okay, like if I'm able to write AK upon AF. So with complete length, this is 4/30. Now you are reaching to the point. Are you getting this? Okay. This AK and directly you are getting FK. Though with the total area, you can see that. Done, everyone? Now, this is your job to find everyone. Now, again, you have to apply this, but this time you have to find FL upon AF. Or FL upon AL, whatever. But ultimately, you have to find FL upon AF. Now you have to make a plan, which transversal I have to choose and which triangle I have to choose, where to apply the main laws. Then I'm reaching to that point. And then again, you have to go for the third one, exactly how to go for like entire this thing. So what I'm saying, okay, you can solve this, right? This is like you can do as your homework now. But what I'm saying, what I'm giving in this, see this carefully. Okay, this is given, and we have to go for this exactly how to find, like how to find the area of the smaller region. So one person was there. He said, no, you have not to work again and again for this. Right? You have not to work again and again for this. If you have to find this type of KLM, then the area with the KLM, the area with respect to the total area of that, this will be xyz minus 1 the whole square upon xy plus y plus 1 into yz plus z plus 1 into zx plus z plus 1. Thus, it means in this case, xyz all are 3:1, 3:1, 3:1. So x is like 3:1,
y is 3:1, z is 3:1. So 3, 3, 3. Now 27 minus 1, 26 square upon 9 plus 13 into 13 into 13. Okay. So obviously cancelling out, this is 4 by 13. Your answer, the set. You have to remember. सर वो zx plus x plus 1 होगा ना? zx plus x plus zx plus x plus 1 बेटा. हाँ आपने z लिखा है इसमें. अभी लिख देता हूँ बेटा. Just a minute. zx plus x plus 1. First is xy plus y plus 1, Sir, yz plus z plus 1, and zx plus z plus 1. And this is x, y, z minus 1 the whole square. Yes, beta. सर XYZ ABC के टर्म्स में क्या है मतलब ABC के टर्म्स में है EB upon AE is x, that is 3:1. हाँ? सर And Y so और on. Z Y और Z यहीं आ गया बेटा. AG upon GC is equal to Y. बताओ क्या आएगा थर्ड वाला? CF upon सर CF upon FP is Z, that is 3 again. Huh? Very simple now. Very simple. सर आप एक बार मास पॉइंट से करके दिखा सकते हो? मास पॉइंट यही रहा ना बेटा, ये जो किया हमने, ये जो रेशियोज निकाला तो मास पॉइंट ही किया ना हमने, ये वाले. तो हमने इसको मास को m ले लिया, इसके मास 1:3 हाँ है. ओके, हाँ हाँ sorry. एग्जैक्टली. बट ठीक है मतलब. बट ये भी जो फॉर्मूला है ना, ये मास पॉइंट से ही आया है. दिस इज द फॉर्मूला फ्रॉम मास पॉइंट ओनली. सर कैसे? अभी दिखा देता हूं, जस्ट वेट. डन एवरीवन? लिख लिया आपने? तो मैं थोड़ा एक बार दिखा दूं इसे मास पॉइंट Yes. पे कैसे. बट यू हैव टू रिमेंबर, आज दो बहुत ब्यूटीफुल फॉर्मूलाज बताया हूं, दोनों आपको याद होने चाहिए. दैट्स इट. हाँ, दोनों याद होने चाहिए. एंड उसी पर पूरे के पूरे हमारी वर्किंग रहती है. सो प्लीज इसको एंड करना होगा. अगर IUQM में हमारे पास है तो 100% वी नो हाउ टू गेट द आंसर. बार बार फिर हमें स्टार्ट नहीं हो जाने. हाँ, ABC D E F. Okay, something like this. Huh? So BD is to DC is 1:x. CE into EA is 1:y. And AF is to FB is 1:z. Okay. Huh? Using mass point geometry. तो ये तो मतलब सिमिलर ही है ना? हाँ हाँ वही है ना. जस्ट एक बार दिखा रहा हूँ कि लाइक 1:x वाले रेशियो में ही ऐसा होगा या कोई भी रेशियो जैसे कि x:y अगर रहता तो बता सकते थे. क्या बात कर रहा है भाई, क्या बात कर रहा है बेटा. अगर 3:2 है तो 2 को वापस ले लिया, 3/2:1 हो गया. भाई x आ गया तेरे पास, रेशियो तो 1 का भी मैं कर सकता हूँ. 3:2 इज सेम एज 3/2:1 ना. ओके ना. अच्छा, हम लोग को ये फॉर्मूला हमेशा ऐसे 1:x के फॉर्म हाँ, लिखना तो है. उसी फॉर्म में लिख दूंगा. हाँ, कि 1:2 में रहा तो हमारे पास. नहीं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा ना, कितना मुश्किल हो जाएगा वो तो देखो. हाँ हाँ सर, समझ गए. राइट. अब ये वाली पॉइंट जो मेरे पास हो गई वो x+1 हो गई, जो मास है हमारे पास. हाँ, BD is to DC. अब ये ZX है तो ये वाला पॉइंट मेरा ZX हो गया. अब ये ZX है तो ये पॉइंट मेरा कितना आ जाएगा? राइट. AR बोल देता हूं, AR is to RD क्या होगा?
x प्लस 1 इंटू जेड एक्स। ठीक है, सब कुछ आपके पास है अब तो ए आर इज टू आर डी कितना होगा आपको दिखने लगेगा यहां से, x प्लस 1 अपॉन जेड एक्स प्लस 1। ओके, सिमिलरली लाइक सो दिस इज ए आर इज टू आर डी जो मेरे पास था, राइट सॉरी, ए आर इज टू ए डी हो गया, ये प्लस कर दिया मैंने ना, ए आर इज टू ए डी, नीचे में इन तीनों को प्लस कर दिया। एंड बेस थीम इज दैट ओनली, तो एरिया ऑफ ए आर सी अपॉन एरिया ऑफ ए डी सी इज ए आर अपॉन आर डी, जो गिवन है वही आ गया आपके पास। हाँ, सिमिलरली जितने भी हैं वो सबको निकाल के जेड एक्स प्लस 1 तीनों को निकाल के रख दोगे आप। एंड ए बी सी में यही एरिया क्या हो जाएगा, तो x इज टू 1 में डिवाइड हो रहा है, x बाई एक्स प्लस 1, तो ए आर सी का एरिया अपॉन ए बी सी का एरिया इज x प्लस 1 अपॉन जेड एक्स प्लस 1 इंटू एक्स बाई एक्स प्लस 1, x टू 1 में डिवाइड किया था, कैंसर, ये आ गया मेरे पास x बाई जेड एक्स प्लस 1 मृत्युंजय। एंड सिमिलरली तीनों में आ जाएंगे, तो ध्यान देके देखो अब तो। हाँ सर। मास पॉइंट से मैंने निकाल दिया आपके लिए बेटा, ये थैंक तीनों पॉइंट यू आ गए। सर। इसको बेरीसेंट्रिक से भी मैं निकाल सकता हूँ, बेरीसेंट्रिक एक थोड़ा सा आगे जाके मैं वो भी पढ़ाऊंगा आपको। तो तरीका बहुत सारा होता है, बट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज द फॉर्मूला, याद रहना चाहिए, रॉक दिस। हाँ, तो सर आपने जो वो वाला निकालने को बोला था ना सर, एफ एल अपॉन ए एफ से वो 4/13 आ रहा है ड्यू टू ट्रायंगल बीसीडी। हाँ बेटा, सर वो सेकंड मेथड। हाँ 4/13 कौन सा निकाला आपने, ये वाला में सर कौन सा, एफ एल अपॉन ए एफ। हाँ सर, एफ एल अपॉन ए एफ। अपॉन ए एफ, द सेम 4/13। ठीक, यस सर। सर और ट्रायंगल बीसीडी से। बी सी डी सर बीसीजी जी, क्योंकि ओके, सर हाँ मतलब और ट्रांसवर्सल हो गया मेरा ए के एल एफ वाला। ठीक, फेयर इनफ, बट नाउ यू अंडरस्टैंड ना, हमें इस तरह के क्वेश्चन जो भी एरिया के आते हैं, हाउ टू डील विद दैट ना। मैं कुछ क्वेश्चंस अभी तुरंत आप लोग को भेज रहा हूं ना, श्योरली आज के आज आपको ट्राई करने हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि 6 o'clock तक में सब लोग अपने अपने आंसर्स मेरे को आज सबमिट करते हैं। फेयर इनफ एवरीवन? सर थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है 6 तक, क्योंकि तो बेटा मैं अभी बाहर हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कर दें, नहीं तो फिर केवल क्लास करके हम कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं ना, तो फिर उसके बाद दूसरा रिक्वेस्ट समझ ही गए होगे क्या रहेगा कि छोड़ दो क्लास, क्या करोगे। जब एग्जाम निकालने का पर्पस है तो पर्पस तो वही रहेगा बेटा ना, पर्पस से एग्जाम निकालना हमारा। ओके, हाँ ओके एवरीवन, चलो आई होप बहुत सारी चीजें, हाँ लेकिन आप लोगों को 3 मैंने कहा था, 2 तो मैंने कर दिया, ये थर्ड जो आपके पास है ये ठीक है, ये थोड़ा अधिक ऊपर चला जाएगा, हाँ बट कभी ना कभी हम लोग उसको भी वर्क इस पे भी करके देखेंगे कि होप